So, clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost for stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got 'em. अच्छा कल अपना ऑडी का डिलीवरी है। अच्छा हाँ करेक्ट, इसको तो संभालना है भाई। ये अपना ड्यूअल टोन माई बात GLS, बट ऑडी में एक ही है कि हेडलाइट जो है ना वो अभी आज शाम को आएगी, मतलब अभी लेट आने वाला है। और उसका पूरा शूट कंप्लीट हो गया है, तो जिगर को बोलना पड़ेगा शूट ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो नाउ वी कैन नॉट रीडू इट, बट हेडलाइट ही गेम चेंजर है बिकॉज दैट इज़ 2021 मॉडल हेडलाइट स्पेशली सोर्स फॉर दिस स्टॉक था। तो अभी आई थिंक कुछ शॉट्स ऐसे ले लेते हैं जो खाली हेडलाइट पे फोकस करेंगे, और मतलब ऑडियंस को भी लगेगा कि कुछ शॉट में ऐसा दिख रहा है, कुछ शॉट में, बट एक्चुअली वही है कि हेडलाइट ही एक ऐसा चीज़ है जो हमने लास्ट में चेंज किया है। बट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हुआ ना, उनका फॉर्च्यूनर कंप्लीट हुआ, बट फॉर्च्यूनर हुआ लाइक दिस इज़ वेरी गुड वेयर द कस्टमर इज़ डिलीवरिंग वन कार और उसका रिजल्ट देख के जो गाड़ी में आते हो गाड़ी छोड़ देते हैं। प्लान भी नहीं था कि ऑडी करना है, बट आई थिंक ही लाइक फॉर्च्यूनर सो या सो ही सेड कि, और स्पेशली दैट इंटीरियर बिकॉज दैट नापा जेन्युइन इटली, सो जनरली लोग बोलते हैं नापा बट लेदर तो होता नहीं है। वी सर्टिफाई, वी गिव 100% गारंटी कि ये इटालियन, ओरिजिनल इटालियन नापा लेदर है। वो फॉर्च्यूनर लिए और 1000 किलोमीटर का ट्रिप मारा। एग्जैक्टली, सो और ये मतलब नवारा ब्लू अगेन टू गुड, सो अच्छा है। बट मुझे ये नहीं पता था कि मतलब उनका ये भी टेस्ट होगा कि उनको कार्बन फाइबर, मतलब अलॉयज कार्बन फाइबर इज़ नॉट समथिंग विच ईजिली पीपल विल अंडरस्टैंड एंड प्रेफर। का कलर भी कितना अच्छा, हाँ, सो एग्जैक्टली दैट चॉइस इज़ वेरी गुड, मतलब लुक्स अमेजिंग। तो अभी डायरेक्शन वाला तो हो जाता है नहीं वो तो है, बट इट्स गुड लाइक पीपल अंडरस्टैंड लाइक दीज काइंड ऑफ कलर्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर anyone to even understand where you are just talking about it कि ये कलर क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा। सेम इज़ द सोनिक ग्रे, like today when it came out I can say that one of the best grey color, so this is what people have to trust। थोड़ा ट्रस्ट हो जाता है तो मज़ा आ जाता है। तो अभी कल थोड़ा इंटरेस्टिंग होएगा, कस्टमर भी बहुत मस्त है। हाँ कस्टमर, हाँ एक तो हेडलाइट वाला जो है वो कलर आज अभी रात को ही कर लेना, और जितना हो सके उतना कल कर लेना। एंड सो गाइस उसमें थोड़ा हेडलाइट का है, आपको एक गाड़ी में 2 हेडलाइट दिखेगी, बट दैट 2021 की जो लेटेस्ट हेडलाइट है वो हमने लास्ट वन में ऐड की है बिकॉज इट्स कमिंग टुडे बाय एयर। तो हम लोग लेट नाइट शूट करेंगे प्लस सुबह भी करेंगे। एंड दिस कस्टमर इज़ वेरी, मतलब बहुत अच्छे हैं हमारे, मतलब बैक टू बैक कार्स आ रही है उनकी, तो अच्छा लग रहा है। पूरा वीडियो आप देखना एंड प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको काम कैसा लगा। सो आई थिंक आपने बिफोर का जो वीडियो है उसमें देखा कि Audi A4 है एंड द कलर वॉज एक्चुअली काफ़ी डल हो गया था, और पूरी गाड़ी में इंटीरियर में भी जो लेदर था वो काफ़ी हार्ड हो गया था। एंड दिस कस्टमर इज़ लाइक वेरी रेगुलर यूज़र, वो बिना गाड़ी के कहीं जाते नहीं, इवन लॉन्ग ट्रिप भी करते हैं, कंप्लीट गुजरात राजस्थान कहीं पे भी अपनी गाड़ी लेके जाते हैं। सो ही वांट्स कि भाई कार काफ़ी कंफर्टेबल हो, उसमें उनको ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता है। एंड सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल वी डू हिज कार। द एंटायर पेंट जॉब हैज़ टू बी परफेक्ट, इवन द इंटीरियर में जो लेदर ले रहे हैं वो भी एकदम सॉफ्ट और अच्छा होना चाहिए। तो कार में जितने भी पार्ट्स है वो हमने ओपन करके उसको अच्छे से पेंट किया हुआ है। एंड द कलर अगेन यूज इज़ मेड इन जर्मनी, सो क्वालिटी में तो आपको कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। एंड दिस काइंड ऑफ कार्स जब आप बोलते हैं कि भाई अगर आप एक फॉर एग्जांपल होंडा सिटी पेंट करते हैं वर्सेस एक ऑडी पेंट करते हैं, तो वाई ऑडी इज़ लिटिल एक्सपेंसिव। सो द थिंग इज़ व्हाट कि उसकी खोल फिटिंग, उसके इक्विपमेंट्स, उसके हेडलाइट निकालना डालना, उसके सेंसर, सो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व रहते हैं। सो जो लेबर भी होते हैं वो भी वेल ट्रेंड होते हैं, दे आर एट अ डिफरेंट सैलरी, सो एवरीथिंग काउंट्स। सो यू नो देर इज़ अ रीज़न वाई कि व्हेन यू आर डूइंग प्रीमियम कार वो थोड़ा महंगा होता है, बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, बिकॉज द पीपल ऑल्सो हु वर्क ऑन योर कार आर ऑल्सो वेल ट्रेंड एक्सपीरियंस पीपल, एंड वी इंश्योर दैट कि आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट ना है, कोई डैमेज ना हो। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। प्लस कलर जो हम यूज़ करते हैं वो तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ब्रांड वी पेंट ऑफ द कार, हम वही यूज़ करते हैं जो बेस्ट होता है, विच इज़ मेड इन जर्मनी, कम्प्लीटली इम्पोर्टेड।
बट या अदर थिंग्स डज मैटर कि उसके खोल फिटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड लोग लगते हैं, तो वो सब की वजह से थोड़ा कॉस्टिंग में फ़र्क आता है. बट या वंस यू डू इट यू विल नॉट इवन मतलब आपको लगेगा नहीं कि वो वेस्ट हुआ. सो ये ऑडी का भी आप आफ्टर देखेंगे तो आपको 100% बहुत अच्छा लगने वाला है, एंड इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग दैट. So right now you can see we have opened the full car because there's a color change. So ideally you should open all the doors, bonnet, dicky. So everything we have removed because when you do the color change, even these panel inside the frames has to be painted. Similarly, even bonnet has to be painted from inside, the dicky has to be painted from inside. So that's why we have opened all these things. And these kind of paint jobs are a little expensive because you have to do so much of opening fitting. So based on client request, we do this. And in this car, we have done it because the client wanted it this way. So stay tuned, we'll show you the further process also. So guys, now you can see we are in the paint booth, and these are the panels which we had removed. So these are both the doors. There are two doors kept there. That's the dicky, that's the bonnet, and we'll be like these are the panels which we have removed and we'll be painting here. Once these panels are painted, then the car will come inside. And because there's a color change, so we have to remove all these panels and paint it inside outside, so that whenever you open the car, it doesn't look like that it was repainted. And after this, we'll get the car and do the painting. There are a couple of fenders here. Even
that also will be painted right now.